topic, that is systematics of living organisms. Okay. Am I audible to everyone? Yes, miss. Yes, miss. Okay, so today's Yes. topic is systematics of living organisms. Means what? बच्चा लोग systematic, as I have told you already. Systematic is like what? हम कोई भी चीज की स्टडी कर रहे हैं, it is उसको पहले systematically we are studying the kinds of different organism, then हम उसको क्या करते हैं, arrangement करते हैं, classification करते हैं, उसका नाम देते हैं, right? जैसे कि living world में we have already discussed. Is it clear to everyone what is the meaning of this systematics? Yes. Okay. So systematic means what? हम study करते हैं अलग अलग टाइप के different टाइप के organisms को, उनका comparative मतलब आपस में compare करते हैं, जैसे कि last time we have seen, जैसे कि for example दो organisms, right? तो कहाँ कौन सा किसको place करना, अगर आपको याद होगा तो KPC of GS देखा था हमने last time. So the arrangement, the study of different organisms, arrangement, classification, all this thing is called as systematics. समझ में आया सबको? Yes. Okay. So now बच्चा लोग यहाँ पे हम लोग कुछ टर्म्स लिखेंगे. आप लोग चलो हेडिंग दो बुक में चैप्टर का. Done? Yes, miss. Yes. ओके. सो एज वी नो कि यहाँ पे अपने बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी किया था. सो अर्थ में बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है आपके अराउंड में. नाउ बच्चा लोग यहाँ पे अभी जो हमने सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे हम लोग, फिर जो मेन चैप्टर का जो ग्रिप पॉइंट है दैट वी विल स्टडी. ओके. सो कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे कि फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक्स. What is systematics now? The study, bolo, the study of am I audible? Yes. तो बोलो बच्चा लोग, what is systematics? The study of different kinds. हाँ. Different kinds of organisms. यस. सो यहाँ पे सिस्टमैटिक्स मतलब कि हम अलग अलग काइंड के अलग अलग डाइवर्सिटी के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं एंड वी रिलेट, वी डू द कंपैरिजन. तभी तो हमको पता चलेगा ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू ऑर्गेनिजम्स, राइट? सो वी स्टडी द ऑर्गेनिजम्स, देयर डाइवर्सिटी, एज वेल एज वी आल्सो कंपेयर देम. ओके. और इसके वजह से वी आर एबल टू स्टडी द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब आपस में क्या रिलेशन है एक दूसरे से. नेक्स्ट वन इज टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी जैसे कि लास्ट टाइम वी हैव सी. व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सोनॉमी बच्चा लोग? इट इज द क्लासिफिकेशन, राइट? कैसे वे में? केपीएस ऑफ जी याद है आपको? पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास. तो कैसे क्लासिफाई करना है, दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी. मींस क्लासिफिकेशन with respect to certain rules or principles. Is it clear? Yes. Okay. So यहाँ पे बच्चा लोग टैक्सो मतलब ही आपका होता है that is arrangement, and नॉमस मतलब rule. Okay. So here arrangement we will do with respect to certain rule or principles. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन. अब क्लासिफिकेशन में क्या होता है आप मुझे बताओ. सबसे पहले आपने एक ऑर्गेनिज्म देखा, ओके, ऑब्जर्व किया आपने. सो व्हाट यू विल डू फर्स्ट? आप इसको क्लासिफिकेशन मतलब समझ रहे हो, देयर आर सर्टेन डिफरेंट क्राइटेरिया, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. ओके. तो अब इस ऑर्गेनिज्म का कौन सा कैरेक्टर क्या है वो हमको कैसे पता चलेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग दैट वी हैव टू डू, वी हैव टू परफॉर्म द सिस्टमैटिक्स, राइट? इसका स्टडी करना पड़ेगा. यस और नो?
जो भी नया ऑर्गेनिज्म हमने देखा, सबसे पहले हम उसको स्टडी करेंगे। आप किसी चीज को कब नाम दोगे? जब उसको आप स्टडी करोगे, आपको पता चलेगा इसमें ये सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, सो वी शुड गिव दिस नेम. So first of all, the first thing that we have to do is study of the organisms, right? So systematics means is nothing but the study of kinds of organisms. तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका स्टडी करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे with respect to other organisms, that what is the relation between this organisms and this. कभी कभी ऐसा होता है ना, this thing is involved to this, right? Evolution is the process of development. Yes or no? Yes. Yes. So first of all, we perform the systematics. Then उसके बाद में we will do the taxonomic, means classify करेंगे हम इसको कि हमको कैसा क्या मतलब what is the kingdom of this, either it is a plant, animal, bacteria, virus, ये क्या है, तो फिर उसको उस हिसाब से kingdom में डालेंगे, right? अगर ये plant है तो कौन से kingdom में जाएगा? बोलो, plant है तो which kingdom? आदित्य, ओम, गोपिका, समृद्धि, समर्थ. बच्चा लोग बोलो कुछ. सृष्टि, अमित, ओम. आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो. प्लांटे. यस. इज इट सो इजी? ओके. अगर ये आपका बैक्टीरिया है तो कौन सा किंगडम? विच किंगडम? फंगाई. Fungi. बैक्टीरिया तो Kingdom फंगाई. Monera. आप इसको प्लेस Kingdom करोगे Monera. बच्चा लोग. Monera. 5 किंगडम आप लोगों को नहीं पता क्या? Miss Kingdom Monera. ओके, ठीक है. नाउ आई गॉट टू नो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीजें बाद में देखेंगे, पहले अभी हम लोग 5 किंगडम का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है? तो अच्छा, आप लोगों को 5 किंगडम में सिर्फ नेम्स पता है, राइट? कौन से किंगडम का क्या कैरेक्टर्स है अभी वो आपको वो नहीं पता है, राइट? सो फर्स्ट विल सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट किंगडम. तो सबसे पहले थोड़ा सा इजी सा एक हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे. सब लोग प्लीज पे अटेंशन है, ये आगे तक काम आने वाला है आपको 12th में भी. तो अब यहाँ पे बच्चा लोग जो आपका 5 किंगडम है ना, दैट इज स्टार्टिंग लाइक कि अभी मुझे एक चीज बताओ, अभी फोन का डेवलपमेंट हुआ है, राइट? तो सबसे पहले फोन डायरेक्ट टच स्क्रीन आया था क्या? धीरे धीरे एवोल्यूशन है. पहले कौन सा वो ट्रिंग ट्रिंग घुमाने वाला था, राइट? जिसमें आप ऐसे घुमा घुमा के डायल करते थे, टेलीफोन. सो इन द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन और डेवलपमेंट, इट इज रिटन एज, आपका जो प्रीवियस वाला पार्ट है दैट विल बी रोट फर्स्ट. उसके बाद में जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे यहाँ पे किंगडम्स आएंगे. अब जैसे आपका फोन का हम ले लेते हैं. सबसे पहले आपका टेलीफोन आया, वो घुमाने वाला. उसके बाद आपका डब्बा आया, कीपैड, राइट? उसके बाद में आपका क्या आया? टच स्क्रीन. यस और नो बच्चा लोग? Yes. यस सर. मुझे एक चीज बताओ, आफ्टर यूजिंग दिस टच फोन वी विल यू गो बैक टू दिस टेलीफोन? No. ऑब्वियसली नो, राइट? बिकॉज जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे टाइम पास होता है, फर्दर डेवलपमेंट ऐड होते जाता है. ओके, कोई भी वापस से रिटर्न में नहीं जाता है. सो सिमिलरली हियर ऑल्सो, जैसे हमने यहाँ पे किंगडम उस फॉर्मेट में लिखा ना स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट वाले में, सो वी विल नॉट गो बैक. ओके, तो अभी आपको अच्छे से थोड़ा सा समझेगा. 5 किंगडम्स कौन से थे? 5 Monera, किंगडम्स बताओ. Protista. Monera, हम्म, Protista, Fungi, एनीमिया. Animalia, Plantae. ओके, ये 5 किंगडम थे. ओके, ये तो Yes. समझ जाएगा. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया, प्लांटे, राइट? सो नाउ Yes. व्हिच इज द मोस्ट प्रिमिटिव, और वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अभी 5 किंगडम तो आपको पता ही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? दिस वन, ठीक है? सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले हम वो क्लासिफिकेशन देखेंगे. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. One is prokaryotic and the another one is eukaryotic.
ओके इसके पहले नाम सुने हो व्हाट इज दिस प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक Yes, miss. ओके हियर प्रो स्टैंड्स फॉर व्हाट प्रिमिटिव पुराना टाइप डब्बा फोन याद है Yes. ओके एंड कैरियोटिक स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है आपका जो न्यूक्लियस होता है ना उसमें अगर सेल एनवेलप प्रेजेंट है तो दिस इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक मतलब एडवांस ऑर्गेनाइजेशन एंड अगर दैट इज एब्सेंट इट इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया बच्चा लोग U stands for true Yes, miss. or advanced. Okay, and karyotic means again nuclear organization. Okay, आप लोग Yes, मेन में miss. हो No, miss. बाकी के बच्चा लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो समझ में आ रहा है सबको Yes, miss. Yes, miss. थोड़ा सा एनर्जेटिकली रहो यार ऐसे आप स्टार्टिंग में दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस इज सो इंटरेस्टिंग ये आपको ना बाद में आगे भी बहुत काम आने वाला है तो प्रोकैरियोटिक मींस व्हाट प्रिमिटिव न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक मींस एडवांस न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है सो डब्बा फोन वाला जो हमने देखा दैट विल बी कवर्ड इनटू दिस प्रोकैरियोटिक और जो हमने अभी टच स्क्रीन देखा जो भी डेवलपमेंट चल रहा है दैट विल बी योर यूकैरियोटिक राइट Yes, miss. नाउ Yes, बच्चा teacher. लोग इन दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपके जो कुछ किंगडम्स है दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड सम आर यूकैरियोटिक ओके सो प्रोकैरियोटिक इज फर्दर इट इज अ यूनिसेलुलर समझते हो यूनि Yes. मीन्स वन सेलुलर मीन्स Yes, सेल sir. राइट Yes. Yes, okay. So in your prokaryotic, the kingdom that involves is your the primitive kingdom. कौन सा होगा पांचों में से? Monera. Monera. Very good. समझ में आया सबको? Because as the name suggests, prokaryotic means primitive nuclear organization. So यहाँ पे सबसे ज्यादा primitive आपका मोनेरा है. So मोनेरा क्या है? मोनेरा is your unicellular prokaryotic living organism. बोलो सब लोग साथ में what is this मोनेरा? Unicellular prokaryotic living living organism. organism. Yes. What is monera? Monera is unicellular primitive living organism. Is it clear to everyone? Yes, miss. Yes. Yes, Okay. miss. अब यहाँ पे आपका first kingdom we are done, right? So now the next one is Protista. अब मुझे एक चीज बताओ बच्चा लोग प्रोकैरियोटिक में आपका मोनेरा तो आ गया, right? Here we have seen two bifurcations. One is prokaryotic and the another one is eukaryotic. Yes or no? Yes. Yes, miss. So यहाँ पे आपका जो प्रोटिस्टा है from Protista to Plantae क्या हो जाएगा वो? Eukaryotic. Yes, exactly. Because जैसे प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक आ गया जैसे कि हमने कहा आपको हम अभी वापस से डब्बा वाला फोन देंगे तो यू विल नॉट यूज इट राइट सिमिलरली हियर आल्सो अब अगर आपका प्रोटिस्टा इट इज यूकैरियोटिक इट इज नॉट पॉसिबल कि आपका जो एनिमल है वो वापस से प्रोकैरियोटिक हो या प्लांटे प्रोकैरियोटिक में जाए समझ में आ रहा है Yes, miss. ओके नाउ प्लीज ये जो क्लासिफिकेशन है इसको आप थोड़ा सा नोटबुक में भी लिखो because this is very important classification for further also. Now your eukaryotic अब यहाँ पे बच्चा आपने देखा कि we have distinguished on the basis of this unicellular right so here again the eukaryotic is further divided into two categories on the basis of this unicellular or multicellular why any idea students okay unicellular means what made up of how many cells multicellular means what More than Many one. cells. okay now अब जैसा कि you can see from this 5 kingdoms one kingdom we had distinguished right on the basis of this primitive nuclear organization correct आगे Yes. आपके बचे 4 so something we have to find out
कि इन चारों के बीच में भी हम कुछ ना कुछ डिस्टिंग्विश कर सके, राइट? अब यूकैरियोटिक में तो चारों ही कवर हो गए, सो समथिंग वी हैव टू फाइंड आउट कि इसमें से ये चारों में भी कुछ ना कुछ हम लोग उसको डिस्टिंग्विश कर सके ना. देयर विल बी सम डिफरेंसेस. That's why fungi is different from animalia, from plantae. Everyone have their own characteristics. Okay, so here eukaryotic unicellular living organism will be which kingdom? Protista. Protista. and Very fungi. good. So here your Protista comes under this. Okay, so ये दोनों kingdom हो गया हमारा. So Protista क्या है? Say along with me. Protista is unicellular eukaryotic living organism. फिर से बोलो. Protista is unicellular eukaryotic living organism. Yes. Now the question will be like this. Dash is unicellular prokaryotic living organisms. Which kingdom? Protista. Have you heard what I asked? Dash is Monera. unicellular Monera. prokaryotic living organism. Okay. Now one more thing. आपका जो मोनेरा है ना, यहाँ पे जितने भी टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं ना, मोनेरा इज द होम फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज. समझ में आया बच्चा लोग? तो जितने भी टाइप के बैक्टीरिया दैट ऑल विल बी प्रेजेंट इन द किंगडम ऑफ मोनेरा. सो मोनेरा इज अ हाउस फॉर ऑल द बैक्टीरिया. इट इज अ होम. Is it clear to everyone? Yes. Yes. Okay. So now again we have moved to this Protista also we are done. It is a unicellular eukaryotic living organism. Next kingdom is your fungi, right? So Yes. now जैसे कि अब आपका ये तो यूनिसेलुलर में कट हो गया. अब अगेन अगर फंगाई आपका मल्टी सेलुलर हुआ तो इज इट पॉसिबल कि अगेन प्लांटे और एनिमेलिया यूनिसेलुलर हो? No. No. Right? It means all these three kingdom will be multicellular. Okay. Yes. So multicellular is further divided into two categories, that is presence of cell wall and absence of cell wall. Okay. Yes. नहीं समझ रहा है? Yes. समझ रहे हैं. Multicellular is further divided into two categories, presence of cell wall and absence of cell wall. So presence of cell walls मतलब cell wall I hope सबको clear है. What is cell wall? Yes. सेल को जो प्रोटेक्ट करने के लिए लेयर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल. सो डू यू नो कि इन 5 किंगडम में से एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हिच किंगडम? एनी आइडिया? Animalia. Good. Okay. So the characteristic feature of the absence of cell wall is a feature of kingdom Animalia. Okay. So यहाँ पे हमारा एनिमेलिया भी इट इज कट डाउन, राइट? अब मैंने आपको पहले पूछा बिकॉज इट इज इजी, लेकिन अगर हम लोग ऐसे फॉर्मेट में जाएंगे तो हम लोग वापस से किस में आएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने जो बोला इट इज रॉन्ग. इसका जो सीक्वेंस होता है दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. नाउ यू टेल मी वन थिंग विच इज मोर डेवलप्ड, प्लांटे और एनिमेलिया? Plants are unable to move from one place to another. They are unable to show locomotion, right? Yes. Whereas you can show locomotion. They are unable to eat from their cells. They do not have organs, but you are having organs, right? So which is more Yes. development? In which Animalia. kingdom more developed? Animalia. Yes, that's why. तो जैसे कि हमने कहा, as we write this classification, it will be with respect to the development. Okay. Yes. Now again. Here the multicellular we have divided on the basis of two, presence of cell wall and absence of cell wall. अब presence of cell wall यहाँ पे we have distinguished कि animalia में cell wall is absent. बचे कितने? 2, right? Fungi and plantae. तो दोनों में cell wall present होगा, correct? Yes. Yes. Okay. So now it is again divided. कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना फंगाई और प्लांटे में आपस में भी, राइट? सो इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन.
Okay. So do you know Yes, what is the miss. autotrophic mode of nutrition? Auto means what? Make their own. Yes, exactly. Auto means self. Trophic means होता है mode of nutrition. So ऐसे organisms, ऐसे things जो खुद से खुद का food prepare करते हैं, that is called as autotrophic, right? So presence of cell Yes, wall, yes. as we have seen, it is present in both fungi and plantae as well. Okay, so both are distinguished on the basis of this mode of nutrition. So one is autotrophic and the another one is heterotrophic. Okay, hetero means what? That depends on other for their Another. mode of nutrition, right? Yes, miss. So do you know autotrophic कौन होता है? Plants. Plant. Yes, exactly. इसको उल्टा लिखना है because here heterotrophic फिर थोड़ा सा more development में है, that is autotrophic plant. So समझ में आ रहा है? Monera, Protista, Fungi, Yes, miss. Plantae, Animalia. समझ में आया बच्चे लोग? Yes. ओके, इसको थोड़ा सा देख के लो, थोड़ा स्टडी करो. Done? Yes. Okay. Now just get ready to give the answers. So first of all, living organisms is divided into how many categories? Two. 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 First which? Prokaryote. Okay, and the next one is? Eukaryote. Okay. Prokaryotic means what? Pro stands for what? Primitive nuclear organism. Yes. Which kingdom Monera. Monera. represents which organisms? Bacteria. Very good. Now eukaryotic is further divided into how many categories? Two. कौन से? Unicellular and multicellular. Okay. Unicellular. आगे. Protista. Kingdom. Protista. Okay. Multicellular is further divided into how many categories? Fungi. On what basis? Presence Presence or absence of cell wall and Presence of cell wall and absence of cell wall. Okay. So presence of cell wall is further divided into? Heterotrophic. Heterotrophic and enterotrophic. Yes. Heterotrophic and Autotrophic. absence of cell wall में क्या आ जाएगा? Which kingdom? Animalia. Okay. Heterotrophic which kingdom? Fungi. Autotrophic which kingdom? Plantae. Very good. So is it clear to everyone? Yes. Yes. Is there any doubt in this classification? This is very important classification. Okay, तो थोड़ा सा रिटर्न में हम लोग अभी वापस से रिवीजन में इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं एंड प्लीज सारे के सारे लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ और सारे लोग साथ में बोलो. ओके, सो प्रोटिस्टा इज व्हाट? बैक्टीरिया. यहाँ पे आपने एक मिस कर दिया, यूनिसेलुलर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटिस्टा इज यूनिसेलुलर than kingdom Monera, right? And represent the organisms like all the bacteria. Okay. So if anyone asks you what is bacteria, so bacteria is unicellular prokaryotic living organism. What is bacteria? Unicellular prokaryotic living organism. Everyone say it loudly. What is bacteria?
Unicellular prokaryotic prokaryotic living organism. Okay, what is Protista? Unicellular eukaryotic eukaryotic living organism. Okay, this thing is very important. Okay, that is यहाँ पे आपका क्या? This is eukaryotic in Protista, and whereas in bacteria it is prokaryotic, right? So that one Yes, thing is very important. Okay. So now fungi is heterotrophic, shows presence of cell wall, multicellular eukaryotic living organism. What is fungi? These are the characters of fungi. Heterotrophic, shows presence of cell wall, multicellular eukaryotic living organism. तो इतना सबको क्लियर है ये फाइलम ये क्लासिफिकेशन? Yes. Yes. ओके, सबको आ गया? Please write it on your notebook. This is very important. इसके बाद पर्टिकुलर कैरेक्टर्स पढ़ेंगे हम लोग एक एक किंगडम का, और इसको आप पहले लिख के ले लो. दिस क्लासिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट. Are we done? Yes. Yes. Okay, everyone? Yes, please. Okay, Yes, very miss. good. एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? 2. थोड़ा सा एक्टिव रहो बच्चा लोग, थोड़ा सा इंथुसियास्टिक रहो. प्राची, ओम, फर्स्ट ऑफ ऑल यार आप लोग थोड़ा सा अनम्यूट करके बोलो. गोपिका, आदित्य, समृद्धि. So living organisms divided into how many categories? 2 categories. Living organism is divided into 2 categories, prokaryotic and Eukaryotic. what happened यार? आज आप लोग बहुत डल साउंड कर रहे हो. Is there any problem? Yes. What happened? अभी कौन yes बोला? क्या प्रॉब्लम है बच्चा? आप लोग को कुछ डिफिकल्टी आ रही है इस क्लासिफिकेशन में? No, miss. तो फिर why so sad? Just be active, be energetic. मॉर्निंग में इतना सैड रहोगे तो पूरे दिन का लेक्चर्स कैसे अटेंड कर रहे हो? अच्छा, क्लाइमेट के वजह से थोड़ा सा स्लीपी फील हो रहा है क्या? इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? Yes. Yes, miss. Yes, miss. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट, तो अभी तो आपको थोड़ा सा और एंथुसियास्टिक होना चाहिए ना. इतना अच्छा क्लाइमेट है, राइट? फटाफट लेक्चर वाइंड अप करके यू कैन एंजॉय द क्लाइमेट. यस और नो? Yes, miss. और अभी तो 11 बज के गया, अभी भी आपको स्लीपी हो रहा है. चलो बी एक्टिव. जब तक इसको एक्टिवली नहीं बोलोगे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे. सो थोड़ा सा एक्टिव और थोड़ा सा एनर्जेटिक. ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 2 Parts. Prokaryotic and Eukaryotic. prokaryotic represents what? Cellular. Okay, which kingdom? Cholera. Home of which organisms? Bacteria. Very good. Eukaryotic is further divided into Unicellular and multicellular. unicellular eukaryotic living organism. Which kingdom? Protista. Multicellular is further divided into Presence of presence of cell wall is further divided into Autotrophic and autotrophic. okay. Heterotrophic कौन होता है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है? fungi. Fungi. Autotrophic represents by the kingdom of dash. Autotrophic mode of nutrition is represented by the kingdom of dash. Plantae. Absence of cell wall is the characteristic feature of Anemia. very good.
सो हो गया सबको याद? Yes. Yes. ओके, अब थोड़ा सा रैपिड फायर खेले. डू यू नो व्हाट इज रैपिड फायर गेम? Yes. Yes. ओके, सो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी और रैपिड फायर मींस यू हैव टू इमीडिएटली आंसर द क्वेश्चन. ओके, इमीडिएटली जो आपका Yes. फर्स्ट थॉट आएगा माइंड में, दैट. ओके, सो this is regarding this classification only. Unicellular eukaryotic. Protista. Protista. Okay. Multicellular absence of cell wall. Animalia. Okay. Unicellular prokaryotic. Monera. Bacteria having the home of. Monera. Okay. Heterotrophic but Fungi. eukaryotic. Fungi. Fungi. Okay. Then next one is मिस बोर्ड नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा, नहीं. क्या हो दिख रहा गया? है. अभी दिख रहा है सबको? Yes, miss. Okay. So फिर नहीं दिख here रहा है. क्लाइमेट की वजह से थोड़ा सा लगता है नेटवर्क इशू भी शुरू हो गया. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीसेलुलर प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. व्हिच किंगडम? Plantain. श्योर? Yes. Fungi and plantain. Planty है ना मिस. मल्टीसेलुलर, हाँ. सो व्हाट इज द डिफरेंस? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल दो में है. Heterotropic and heterotropic. यस. सो हियर मैंने आपको क्या क्वेश्चन पूछा? मल्टीसेलुलर प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. सो प्लांटे एंड फंगाई both are multicellular. Both show the presence of cell wall. So answer will be Yes, plantae and fungi. समझ में आया? So just Yes. be Yes. active, be alert what you are saying. Okay? Yes, miss. So यहाँ पे हो गया आपका classification. So next, again, the next classification, before starting the chapter, we will study the certain characteristics of certain kingdom, जिसमें से आधा से ज्यादा तो आपको पता ही है. ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मोड लिख लेते हैं, जैसे कि कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स आप समझते हो? ओके, सो फर्स्ट कैरेक्टर इज सेल टाइप, नेक्स्ट इज सेल वॉल, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अभी जो क्लासिफिकेशन हुआ उसमें किसी को कुछ डाउट? No. ओके. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड द नेक्स्ट वन इज इकोलॉजिकल रोल. ओके, कैरेक्टर सबको समझ में आया? अच्छा, बॉडी नहीं दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है? Yes, miss. हाँ, Okay, दिखा so है. these are the characters: cell type, cell wall, nuclear membrane, body organization, mode of nutrition, MON, and the next one, sixth one is ecological role. ठीक है? Yes, miss. So can we start now? Yes, miss. Okay, so the first kingdom, सबसे primitive, that is Monera. Cell type कैसा होगा बच्चा लोग? Prokaryotic, eukaryotic? Prokaryotic. Yes. Cell wall presence, absence? Absent. Absence. Okay, first of all, let me clear one thing. आपके बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है and that is why they are disease resistant. Sorry, disease causing. Okay, so in Monera, in bacteria, cell wall is present. Okay. Yes, miss. क्योंकि यहाँ पे मेन, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है तो इट शुड बी इन दिस यूकैरियोटिक सिस्टम, बिकॉज जो मेन सेल टाइप है जिसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, वो ऑलरेडी हो चुका है. राइट? तो सबको समझ में आया? तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है. ठीक है, इन बैक्टीरिया सेल वॉल आर प्रेजेंट. ओके. Yes. ओके. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रेजेंस और एब्सेंस?
if you remember, when I was talking about the difference between prokaryotic and eukaryotic, जो हमने study किया था primitive nuclear organization, that is in respect to nuclear membrane, बताया भी था मैंने आपको, याद है? Prokaryotic nuclear membrane is absent, that's why it is called as primitive. In eukaryotic they are present, that's why called as eukaryotic. समझ में आया? So nuclear membrane is Yes, miss. absent. तो plus मतलब present, minus मतलब absent. Okay? Body organization is like grade of cell. Unicellular, multicellular. Unicellular. Yes. किसी को कुछ डिफिकल्टी लग रही है इसमें? No, miss. Okay. Mode of nutrition. तो यहाँ पे कुछ हम एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी पढ़ रहे हैं, जैसे कि सेल वॉल, राइट? मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया का हमने नहीं देखा था ना. सो इन बैक्टीरिया देयर इज, वैसे तो 2 टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, बट इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. ठीक है? सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया इन मोनेरा, इट इज स्पेसिफिकली 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक. इसी बहाने आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो जाएगा. आपको कितने टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता है बच्चा लोग? एक भी नहीं. एक भी नहीं? ओके, सिर्फ ये ऑटो और हेट्रो यही मालूम है ना? हाँ बच्चा बोलो. सैप्रोफाइटिक भी होता है ना? यस, अभी हम लोग वही स्टडी करेंगे कि कितने कितने टाइप्स के होते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द डिफरेंस बिटवीन दिस ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक, एवरीवन, राइट? सबको पता है डिफरेंस? Yes, miss. Okay, so now we will see the difference again in autotrophic. So autotrophic is further divided into 2. One is your photosynthetic, or you can say phototroph, and the another one is chemotroph, or you can say chemosynthetic. दोनों चलेगा, ठीक है? Synthetic मतलब for production, troph मतलब उसका ऐसा मोड है. Is it clear? Yes. Yes or no? But Yes, hello. miss. Okay. So in heterotypic, it is further divided into saprophytic. ये आपको लिखना है. These are the characters of the kingdom. That is very 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 important. यहाँ पे अगर आप इतना मेन जो कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर जिसको हम कंसिडर करते हैं ना, यहाँ पे अगर आपको अभी इतना आ गया, so that will be a great. आगे आपको मतलब ज्यादा नहीं करना पड़ेगा स्टडी, बिकॉज हम लोग ने एकदम जनरल जो कैरेक्टर्स है वो हमने ले लिए. समझ में आ रहा है सबको? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 का डिफरेंस कोई बता सकता है? देन मैं 4th वाला लिखूंगी. मिस फोटोट्रॉफ Any idea? मतलब जिसके पास फोटोसिंथेसिस होता है. ओके, फोटोसिंथेसिस मतलब क्या बच्चा? जनरली सनलाइट What do का you mean? यूज करते हैं. वो एक यस, जो खुद का खाना खुद से. खुद का खाना खुद से बना, दैट इज ऑटोट्रॉपिक. बट हियर ऑटोट्रॉपिक इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2, राइट? ये भी ऑटोट्रॉपिक है, ये भी ऑटोट्रॉपिक है. सो देयर इज समथिंग डिफरेंस बिटवीन दिस 2, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक में भी हैव डिवाइडेड. तो अगर Yes, डिवीजन miss. आ रहा है, इट It was मींस देयर इज sunlight. समथिंग. यस, Use in of the sun- presence of sunlight. फोटोसिंथेसिस के Exactly. हेल्प for से. making their food. Yeah, it's very good. So in photosynthesis, it means with the help of sunlight, the bacteria are making the food. Whereas in chemosynthetic means what? Use of chemicals. Oxidation will help. Okay. So जो chemosynthetic bacteria होते हैं ना student, it is with the presence of chemical, you can say, the food is produced. That's why it is called as chemosynthetic. समझ में आया सबको? Yes, miss. Okay. So यहाँ पे your hetero means what? किसी और पे depend रहना. Okay. Yes, So miss. it is further divided into saprophytic as well as parasitic. Okay. So what is Yes, the miss. difference? Saprophytic, parasitic, any idea? सुने हो पहले कभी? सेप्रोफाइटिक पे Organism. डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे रहते. सेप्रोफाइटिक फंगाई जैसे. Very good. और parasitic?
पैरासाइटिक मतलब इट डिपेंड्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, सेप्रोफाइटिक में Yes, आपने क्या miss. स्टडी किया? डिकेइंग वाले में. ओके, पैरासाइटिक मीन्स व्हाट? लिविंग. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. लाइस सबको पता है? Yes. जुए. ओके, अब Yes, योर miss. पैरासाइटिक इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू. वो हम आगे देखेंगे, अभी आपको इतना नीड नहीं है. एंडो पैरासाइट एंड एक्सो पैरासाइट. ठीक है, एंडो मीन्स बॉडी के अंदर, एक्सो मतलब बॉडी के बाहर. सो हियर लाइस रिप्रेजेंटिंग एक्सो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि वो आपका ब्लड सक कर रहा है, आपके हेड के ऊपर प्रेजेंट है, तो राइट, इट इज Yes, सकिंग योर miss. ब्लड. सो दिस इज कॉल्ड एज पैरासाइटिक. डिपेंड तो दूसरे पे ही कर रहा है, राइट? आपके ऊपर डिपेंड Yes, है वो, miss. आपके ब्लड के ऊपर. So it is depending on the another, but on living organism, because you are living, we are living, right? So lice अगर हमारे ऊपर Yes, है, या फिर miss. इसके अलावा you can take the another example of ticks. ticks पता है सबको, dogs के ऊपर रहते हैं ना, brown brown छोटे 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 छोटे. That is called as ticks. Board नहीं दिखा. That is called as ticks. जो dog के ऊपर present होते हैं ना, छोटे छोटे black black कीड़े एकदम. So it is also representing this parasitic, क्योंकि मतलब डॉग भी आपका लिविंग है, राइट? तो लिविंग के ऊपर जो प्रेजेंट होगा बच्चा लोग, फॉर ऑब्टेनिंग द न्यूट्रिशन, इट इज कॉल्ड एज पैरासाइटिक. समझ में आया सबको? Yes, डिफरेंस miss. समझा बच्चा लोग? फोटोट्रॉपिक मीन सनलाइट का यूज करके प्रोडक्शन ऑफ फूड. केमोट्रॉप मतलब केमिकल का यूज करके प्रोडक्शन ऑफ फूड, राइट? Whereas in heterotrophic it means saprophytic means depending on the decaying organ, मतलब dead organism, right? Parasitic मतलब Yes, miss. लिविंग ऑर्गेनिज्म. फर्क समझो, चार के चारों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है. यहाँ पे दोनों सेल्फ फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, बट दिस इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इट इज ड्यू टू द केमिकल्स. यहाँ पे दोनों दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, बट इट इज डिपेंडिंग ऑन द डेड ऑर्गेनिजम्स एंड इट इज डिपेंडिंग ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इज इट क्लियर? Yes, miss. Is there something difficult? No, miss. Okay, very good. So the next one is last category is ecological role. मतलब generally इनका जो important role है वो क्या है? Yes, बच्चा बोलो. मैम केमोट्रॉपिक मतलब क्या बोला आपने? Which depends on the chemicals for synthesizing the food. ओके Okay. So last one is ecological role. What is the general role of the bacteria? Any idea? Any guesses? डिकम्पोजिशन. Very good. Bacteria are act as solely for decomposition. कोई भी चीज अभी आपको वो करनी है, लिविंग हो, biodegradable, so all are decomposed with the help of this bacteria. So the ecological role means what, bacha? That is helpful for us, right? So here the bacteria are act as decomposers. Decomposition, I hope सबको पता है what is decomposition, right? Yes, miss. Degradation of certain thing, right? उसको धीरे 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 डिग्रेड. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एक बनाना रख दिया, ओके, राइपेंड बनाना. राइपेंड मतलब कैसा? ऑलमोस्ट पूरा पका हुआ बनाना, ठीक है. अब उसको आपने 4 दिन रख दिया, उसका क्या हालत होगा? इट विल बी स्लोली 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 डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा फर्स्ट डे से वो, क्योंकि वो एकदम ऑलरेडी पहले से राइपेन हुआ था, पहले से ही पूरा पका हुआ था. Am I audible? Yes, ओके. तो उसको आपने रख दिया अभी, तो 4-5 दिन में तो वो आधा तो गायब भी हो जाएगा. आप देखते हो ना पूरा वो मतलब सड़ के डिकम्पोज होना शुरू हो जाए. डिकम्पोज मतलब कि अल्टीमेटली सड़ना, राइट? तो वो जब वो सड़ता है तो पिलपिला हो जाता है. बैक्टीरियाज आर एक्ट एज फॉर द, क्या बोले बच्चा? वो बोलो. पिलपिला जैसा हो जाता है. Yes, exactly. So it is like decomposition. Decomposers का जो main ecological role है, that is of bacteria. So is it clear to everyone, बच्चा लोग? Yes. Okay, Yes, इसको लिखो miss. फटाफट. So after Monera, next kingdom is our Protista. So ऐसे थोड़ा सा जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे. So are we having any doubt in kingdom Monera? No, miss. Okay.
So next is Protista. It will be prokaryotic, eukaryotic. Eukaryotic. Okay. Cell wall presence, absence. Presence. Okay. Now there are exceptions also. In some organisms of Protista, cell walls are absent. So present in some organisms. बहुत सारा नया चीज पढ़ने मिल रहा है, right? So in Protista, Yes. cell wall is absent in some organisms, so that's why it is present in some organism. Nuclear membrane present or absent? Present. Very good. Body organization क्या होगा बच्चा लोग? Multicellular, unicellular. Body organization will be unicellular. unicellular होगा. Multicellular भी होगा. Protista represents unicellular eukaryote. Okay. Yes. Multicellular Protista में होते हैं, but general अगर आप general में बोलोगे तो it is unicellular eukaryotic, right? There are some organisms that is multicellular also. So next is mode of nutrition. So Protista में mode of nutrition क्या होगा बच्चा लोग? Both. ऑटो हिट्रो. सोच के थोड़ा सा बताओ. ऑटोट्रॉपिक या हिट्रोट्रॉपिक? ऑटो मतलब खुद का फूड खुद से प्रिपेयर करना, राइट? खुद से सिंथेसाइज. Heterotic. फंगाई आर हेट्रोट्रॉपिक? Yes. Okay. So, but we are talking about Protista, right? तो Protista क्या होगा? No idea? So Protista also showing the 3 category of mode of nutrition. एक तो है आपका autotrophic. Autotrophic में it shows photosynthetic. मतलब कौन सा? It is also showing phototrophic mode of nutrition. Blue green algae सुने हो आप लोग? Yes, miss. No. That is from the Protista only, which is performing the photosynthesis. Okay. So autotrophic में photosynthesis मतलब with the presence in the presence of sunlight. Euglena वगैरह पता है आप लोगों को? Euglena? Yes, miss. Okay, Yes, it is yes, from ma'am. Protista. Euglena in the presence of sunlight act as photosynthetic, and in the absence of sunlight, it act as heterotropic. तो समझ में आया आपको? एक ऑर्गेनिज्म दो न्यूट्रिशन का मोड दिखा रहा है. जब सनलाइट प्रेजेंट होता है तो वो ऑटोट्रॉपिक होके फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है, बट जब सनलाइट एब्सेंस होता है तो इट एक्ट एज हेटेरोट्रॉपिक. डिफरेंट जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हो उनके ऊपर फीड करता है. ओके, सो इज इट क्लियर? तो ऑटोट्रॉपिक में हियर वी कैन सी इट इज फोटोट्रॉफ, मतलब photosynthetic. In the presence of sunlight it is showing the mode of nutrition. And the next one is heterotropic. बच्चा लोग समझ रहे हैं या नहीं? Any doubt? समझ रहा है मिस. Okay. No miss. अब यहाँ पे इकोलॉजिकल रोल फंगाई का क्या है? What is the ecological role of fungi? Decomposition. Yes. But we are talking about Protista. So what is the ecological role? Protista मतलब आपका eukaryotes, unicellular, right? Yes or no? Yes, miss. Yes, yes. Okay. So it will be, you can see it is showing the autotrophic in the presence of sunlight, right? तो एक साइड से it is preparing its own food. तो जो अभी इसके ऊपर yes. फीड करेगा, सो एक साइड से यू कैन सी कि प्रोटिस्टा आर एक्टिंग एज प्रोड्यूसर्स. Yes, ma'am. प्रोड्यूसर्स Yes, मतलब yes. समझते हो? दैट इज प्रोड्यूसिंग Yes. समथिंग, राइट? Yes. सो दिस 2 किंगडम्स आर इनफ फॉर नाउ. अभी इसको लिख के लो आप लोग फटाफट, दिस कैरेक्टर. बाइफर्केशन दीजिए. सबसे पहले कैरेक्टर्स का वो बनाइए.
किसके बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस आ रहा है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ. डन बच्चा. Characters में first one is cell type, then cell Yes. wall, then nuclear membrane, then body organization, then mode of nutrition, and the last is ecological role. ओके पहले टेबल मत बनाना, पहले लिखो, ठीक है. अब जैसे आपने ये लिखा, देन मोनेरा दो, प्रोकैरियोटिक, सेल वॉल प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, यूनिसेलुलर. ऑटोट्रॉपिक में बच्चा जहाँ पे आपने मोड्स लिखे फोटोट्रॉपिक, वहां पे फॉर योर मतलब फॉर योर इंफॉर्मेशन थोड़ा सा अंडरलाइन करके यू कैन राइट देयर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फूड इज प्रिपेयर्ड. केमोट्रॉपिक में इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल फूड इज प्रेजेंट. ओके. And in heterotropic also you can underline this saprophytic and you can write there depend on dead organisms, decaying organisms, or parasitic में it depends on living organisms. समझ में आया? Yes. Yes, Okay. ma'am. Okay. Are we done with Monera? Yes, miss. Okay. So next one is Protista. So Protista का cell type is eukaryotic. Cell wall present in some organisms because कुछ organisms में cell wall is absent. Nuclear membrane is present, but obviously because it is eukaryotic, right? Body organization जो in general होता है that is unicellular eukaryotic protistas, but some are multicellular also. But यहाँ पे भी आप general characters में फिलहाल सिर्फ unicellular लिखो, because उसके basis पे हमने प्रोटिस्टा को distinguish किया from the other, right? Yes or no? Yes, miss. जाग रहे हो ना सब लोग? Yes. Yes, So next miss. one is mode of nutrition. So Protista shows two types of nutrition. One is autotrophic and again the another one is heterotrophic. So in the presence of sunlight, it will be show autotrophic. So that is called as photosynthetic, or you can say phototroph in the presence of sunlight. And यहाँ पे heterotrophic में लिखो, मतलब हाँ वो तो हमने यूग्लिना का एग्जाम्पल देखा, ठीक है. So your Protista is also representing autotrophic and heterotrophic. Autotrophic में भी अभी हमने देखा दो है. One is chemo वाला जिसमें केमिकल यूज करके फूड सिंथेसाइज हो रहा है, and the another one is phototrophic जिसमें सनलाइट यूज हो रहा है. So here Protista is representing the photosynthesis जिसमें सनलाइट यूज करके फूड प्रिपेयर हो रहा है, right? Yes, miss. And the Yes. ecological role, Protista are acting as producers. Are we done? Yes, miss. Yes, किसी को कुछ डाउट? No, miss. No, Okay. miss. So next fungi अभी करना या next lecture? कैरेक्टर्स अभी डिस्कस करने हैं फंगाई के या नेक्स्ट लेक्चर? आज आप लोग बिल्कुल भी एनर्जेटिक ही नहीं हो. व्हाट हैपन? इतना ज्यादा क्लाइमेट में हो जाओगे तो कैसे चलेगा? स्टडी कैसे करोगे? फंगाई का फटाफट डिस्कस कर लेते हैं बच्चा लोग. Yes, miss. सो साथ में डिस्कस करते जाएंगे और साथ में लिखते चलो. ओके. सो फंगाई फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक? Eukaryotic. Eukaryotic. सेल वॉल विल बी एब्सेंट और प्रेजेंट? Present. Present. ओके. एंड मेड अप ऑफ व्हाट? अच्छा ठीक है, वो बाद में हम लोग करेंगे. इट इज प्रेजेंट, ठीक है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, एब्सेंट? Present. Present. Body organization will be unicellular, multicellular? Multicellular. Multicellular. Very good. Mode of nutrition will be Autotrophic. again Utilitarian. autotrophic and Heterotrophic. Utilitarian. yes, very good. Because we know कि आपका जो fungi है, it is also acting as decomposers, right? So the ecological yes. role of fungi, it is again they are Decomposers. decomposers. Very good. So decomposers है मतलब it means they are showing the heterotrophic mode of nutrition. चलो फटाफट characters लिख लो.
बच्चा आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो? ऑटोट्रॉपिक कैसे हुआ? क्या बोल रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं। ऑटोट्रोपिक कैसे होगा? कैसे होगा? वहां पे उसका जो है फूड खुद से सिंथेसाइज कर रहा है ना, दैट्स ऑटोट्रोपिक। अभी जैसे यहाँ पे हमने देखा ना, फॉर एन एग्जांपल प्रोटिस्टा में भी देयर आर ऑल्सो 2 टाइप्स। तो इसका टेंशन मतलब, ये भी हम जब डिटेल स्टडी करेंगे ना, दिस आर द जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, तो अभी ये जनरल कैरेक्टर्स में, सो डोंट वरी। जब हम डिटेल में देखेंगे तो वो टाइम पे आई विल लेट यू नो। ओके, Yes, ma'am. so are we done with this? Cell type, it is eukaryotic, Yes, cell wall present, nuclear member present, body organization multicellular, mode of nutrition autotrophic as well as heterotrophic. Ecological role, it is also acting as decomposers. Decomposers. तो किसी को कुछ डाउट यहाँ तक? No. ओके, थैंक यू सो मच बच्चा लोग, वी आर डन फॉर टुडे। अब नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा